हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं फरहत हुसैन और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग HTML5, CSS3 and JavaScript. So first of all, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप इसमें कोई भी इनपुट लें, टाइम्स 2 करें इज इक्वल टू 4, इसको क्लियर करें, फिर 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 और हम देखेंगे माइनस भी चेक करेंगे कि कैसे ठीक हुए यूज़ किया जाता है। सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वेरी सिंपल कैलकुलेटर है और इसका रिजल्ट भी ठीक से आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट HTML5 डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड इमेज है, फिर टेक्स्ट है और फिर कैलकुलेटर है। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू सेट ए बैकग्राउंड इमेज फॉर आवर वेब पेज। तो इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, Notepad, Notepad++, or for this particular tutorial we are going to use Dreamweaver. So Dreamweaver के लिए आप फाइल पे जाएं, न्यू फाइल क्रिएट करें, यहाँ से HTML सेलेक्ट करें, क्रिएट। और जैसा कि आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो सबसे पहले इन द बॉडी एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू क्रिएट ए div। तो div टैग, फिर एक हम क्लास असाइन करेंगे, उसको नाम दे देंगे कंटेनर और फिर हम div टैग को बंद कर लेंगे ये। और इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, फिर हम एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जैसे कि हाउ टू क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक H1 हेडिंग टैग लेंगे और टैग H1 टैग को क्लोज कर लेंगे और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको रिक्वायर्ड है। How to create a simple calculator using HTML5, CSS3 and JavaScript। ठीक हो गया। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, हम यहीं पे सेव कर लेते हैं। हम इसको नेम देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर मैं इसको माई कॉल लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर क्रिएट किया हुआ है। तो माई कॉल देके हम इस पेज को व्यू कर सकते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक टेक्स्ट क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक और हेडिंग देंगे। जैसा कि आप कोई भी हेडिंग H1, H2 कोई भी हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो H2 टैग को हम, तो सेकंड हेडिंग के लिए हम लिख देंगे विथ ठीक है, आप कुछ भी लिख दें, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट ए फॉर्म टैग। ठीक है,
इसको आप नेम भी असाइन कर दें, जैसे कि कैलकुलेटर। फॉर्म टैग को फिर हम क्लोज कर लेंगे एंड नेक्स्ट सेव करें। और साथ ही हम ये करेंगे कि इसके साथ हम स्टाइल शीट भी क्रिएट कर लेंगे। तो स्टाइल शीट आप एक्सटर्नल में ले सकते हैं, इंटरनल भी, जैसे आपकी मर्जी। तो फॉर दिस ट्यूटोरियल मैं स्टाइल शीट इसके अंदर ही हेड एरिया में लेने वाला हूँ, जैसे कि स्टाइल टैग स्टार्ट करें, फिर इसको क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, तो हम इसके लिए बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। तो हमारे लिए इजी होगा कि हम पूरे कंटेनर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स असाइन ए बैकग्राउंड। तो हम बॉडी टैग ले लेते हैं, इसमें बैकग्राउंड इमेज, ब्राउज़र में जाएं, हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड इमेज पड़ा हुआ है, जैसे ये वाला। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, सेव करें और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमारे पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड इमेज सेट हो गया। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे कंटेनर को भी, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है ना मिडल में शो हो, सेंटर हो जाए। फॉर दैट वी आर गोइंग टू गिव ए स्टाइल टू आवर heading 1. So first of all we are going to give a font size हम कर लेते हैं, font size हम चूज कर लेते हैं 30 पिक्सल। कलर हम कर लेते हैं रेड, ठीक हो गया। हम इसको सेव करते हैं, फिर साथ ही हम ये करते हैं कि हम कंटेनर को हाइट विड्थ असाइन कर देते हैं। कंटेनर हम इसको करते हैं कि इसकी हाइट विड्थ ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी विड्थ ले लेते हैं, विड्थ 600 पिक्सल। फिर हाइट हम इसको असाइन कर देते हैं 300 पिक्सल और यस, फिर हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट, रिफ्रेश दैट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइट तो विड्थ असाइन हो गई है, बट हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर में ले आएंगे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू असाइन ए मार्जिन। तो फिर हम इसको मार्जिन सेट कर देते हैं, टॉप मार्जिन टॉप 60 पिक्सल कर लेते हैं। फिर हम इसको मार्जिन लेफ्ट कर लेते हैं 500 पिक्सल। हम फिर इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और मेक श्योर हाइफन लगाना नहीं भूलिएगा। सेव करते हैं, let's go back and refresh the page. So as you can see our text is now in center. So next we are going to create a form. तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए we are going to use a form tag and for that purpose we are going to use input type। जैसा कि आप मैं अगर आपको दिखाऊं ओरिजिनल प्रोजेक्ट में, तो as you can see we have a text box, then we have buttons
and then we have the clear button on the bottom. So first of all, we are going to create a text box where we are going to display our result. So let's create a text box. So type text, हम इसको क्लास भी असाइन कर देते हैं. To create a button, we are going to use the input tag. Input, then we are going to declare type button, then we are going to assign a class. हम इसको एक class भी assign करेंगे जो कि later on we are going to use to style our button. So what name we are going to give our class? Button style. और साथ ही हम इसको वैल्यू भी डिक्लेयर करेंगे. इसकी वैल्यू 1 दे देंगे हम, और फिर हम इसको इस टैग को क्लोज कर लेंगे. Here you go. So save that and go back to your page and refresh it. So as you can see, we have created button as well. Next, as you can see, हमारा जो बटन है वो नेक्स्ट टू आवर टेक्स्ट बॉक्स है. तो हमें यहाँ ये नहीं चाहिए, हमें ये इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज ए बीआर टैग. बेसिकली ये बीआर टैग यूज किया जाता है सेकंड लाइन स्टार्ट करने के लिए. सो हम बीआर टैग यूज करेंगे, सेव करेंगे, you go back to your project, refresh it. So as you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा बटन सेकंड लाइन से स्टार्ट हुआ है. सो हमें 1 2 3 बटन यहाँ पे चाहिए. सो टू सेव टाइम we are going to copy it, we are going to paste this line for 3 times. We need 1 2 3. So 1 2 and then 3. हमारे पास ये 3 बटन हो गए. हमको 3 और चाहिए. कॉपी करें और हम इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे. ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी है कि हम वक्त भी बचा सकते हैं. 1 2 3 हम इसको चेंज कर सकते हैं 4 5 और 6. फिर इसको सेव कर लें. फिर हम इन तीनों को एक बार फिर पेस्ट कर देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इजी है. हम 6 फिर 7 8 और फिर 9 ये हमने इनपुट बटन क्रिएट कर लिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू सेव दैट. हम इसको रिफ्रेश करेंगे. So as you can see, our whole buttons are created 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बटन एक ही लाइन में हैं. तो हमें ये ऐसे नहीं चाहिए. हमें आप 3 बटन, जैसे कि आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट में देख सकते हैं हमारे 3 बटन ऊपर हैं, फिर 4 और 5 नेक्स्ट लाइन से, फिर 7 8 नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गिव ए break line. So basically each line will start from the next row. So यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे और इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे. Save that. You go back to your project, refresh that. So as you can see, we have created our button inputs. So next we are going to look at, if you look at our original project, so as you can see we have plus, then we have 0, then we have multiplication, division, then minus sign, then is equal to, then clear. So next we are going to create our next input, which is input type. हम इसको असाइन कर देंगे बटन. ये भी बटन ही है बटन. हम इसको क्लास भी असाइन कर देंगे क्लास. सो क्लास इसको हम दे देते हैं एडिंग, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए. एडिंग स्टाइल
इसकी वैल्यू भी हम असाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखें हमें ये प्लस का साइन चाहिए, तो हम इसको प्लस का साइन भी ऐड कर लेंगे। फिर इस टैग इनपुट टैब को हम क्लोज कर लेंगे। So save that, go back to your project, refresh it. So as you can see, we have added another button with a plus sign. So next we are going to add 0. So for that purpose, what we are going to do, we are going to copy and then we are going to paste it here again. So we are going to change this input to 0, and we are also going to give a class name, which is we are going to give a button style. So later on we will use this style, this class to style our button input. So if you paste it here, so go back and refresh it, your project. So you can see we have added 0 as well. So next, as you can see, after 0 we are going to create a division, then minus, then is equal to, then clear. So for that we are going to go back to our code, and then we are going to create an input. So if I copy that to save a time, then I'll add it somewhere down here. So we are just going to change operator sign. We are going to add a multiplication. This is also a button, but we are going to give a different style. So we are going to give a different class name. For that we are going to use multi style, and then next, जैसा कि आप देख सकते हैं कि next we need division operator from the next line. If you are starting from the next line, well, we are going to use br tag. If you create there, save that, go back to your project, refresh it. So as you can see, we have added our multiplication sign as well. So next we are going to create, if you look at, next we need division, minus, and is equal to. So for that we are going to copy this whole and we are going to paste it here. So this is also a button, but we are going to give a different class name, which is divide style, and the next button, and we are going to change its value. We are going to give a division. The next one is minus sign. We write on minus style, and we are going to give a value minus. The next one is equal to, so where we are going to use a is equal to operator, and we are going to change its class name as well. So we are going to give a result, and we are going to give a result button. We are going to give a different class name for this, and save that, go back to your code and refresh the browser. So as you can see, we have added plus, 0, multiplication, division, minus, and then we have added a is equal to as well. So when we press this button, we need the result will be shown up here. So next we need a button to clear the result from our calculator. So what we are going to do, we are going to use one more input. Basically we use input type. We are going to declare a type. This is also a button,
and then we are going to give a class, give a name as you like, but for this I have given name a clear button. Basically this class we will use to style our button. So give a value, and what we're going to write on the button, we are going to write on a clear, and then we are going to close our input. So save that, go back to your browser, refresh it. So as you can see, we have added a clear button. So we are going to move our clear button to the bottom of this to move clear button, and we're gonna add it to next line. So let's do that. What we are going to do, we are going to use a br tag, then we are going to close this tag, save that, refresh the page, and as you can see, our clear button is started in the next line. So next, as you can see, our calculator is ready. Now next we are going to give a style uh, to our calculator. So first of all, we are going to give a style to our input box. So let's start. So as you can see, our original project, we have input box, and we have given a border, we have given a background as well. So let's start. So what we are going to do, so first of all, we are going to select our class, which is the result output. So if we want to style our input box, so which is result output, yep, and we are going to close a curly bracket. So what we are going to do here, we are going to assign a border. We are going to give it 2 pixel as solid. Then we are going to assign a color, solid. Then we are going to assign a color, select a color. Basically you can put it color code, or you can select DE, which is gray. Save that. If you go back to your calculator, refresh the page, so as you can see, we have assigned a background. So next we are going to assign a border radius. So border radius, we are going to give a 5 pixel border radius. Next we are going to assign a background, which is gray. And next we are going to assign width, which is 30 pixel, and then we are going to assign a height, which is 25 pixel, and then we are going to, as you can see, we have declared a pixel with a capital, so you can declare with a capital or small letter, doesn't make difference. So next, if we assign a font size, we are going to assign around 25 pixel, and next we are going to assign a padding, which is gonna give it around 8 pixel padding around that text box. So if you save that, go back to your project, refresh that. So as you can see, we have assigned a text box with a width of
something is very small, so let's check what's gone wrong. So 25 pixel. Now we need width, which is wrong. We need around 289 pixel. If you save that, go back to your box. So as you can see, we have assigned a right width to our text box. Next, we are going to give a style to our buttons. So for that, let's go back to our style sheet. To style buttons, we are going to select button style class, so which is button style. We are going to close our curly brackets. So what we are going to do, we are going to give a background. We are going to select a background which is black. Save that, and then the next we are going to declare its width, which is around 100 pixel, and then its height, which is around 50 pixel, and the text color, which is white. You can select manually, but you can write on white as you like. So the next we are going to give a border around 2 pixel, then solid, then we are going to assign a color. So the border color is same as our first, so we can copy from the first text. So we are going to assign a same border to our all buttons. Next, what we are going to do, we are also going to give a border radius, which is same as our text box. So we are to save some time, हम कॉपी करेंगे और इसी को पेस्ट कर देंगे. Then next we are going to give a font size which is same as which is smaller than our result, which is 20 pixel. Then we save that. Next we are going to give it some margin from top, and from top is around 3 pixel. Save that, go back to your project and refresh. As you can see, our all buttons are styled with a black background with a white text. So basically what we have done, as if you look back to your code, as you can see, हमने सबको एक ही क्लास असाइन की थी सब बटन को, इसलिए ये सारा स्टाइल जो है ये सब बटन पे अप्लाई हो गया है. So this is what we use classes for. And next, if you look back to your code checked, so as you can see, we have different style for our plus, multiplication, division, minus is equal to, and clear size. So we are going to style them separately. So for that reason we are next we are going to style our plus button. So for that we are going to select adding class. So you can copy adding class, and then start curly bracket, then give a background which is green, and background color and green, and then we are going to select font size, which is around 20 pixel. Color, text color, which is white. The next we are going
declare width which is 50 pixel, जैसे कि width इसकी 50 pixel है, और and then we are going to add a height which is around pixel and the width which is around 100 pixel. So if you look, and then next we are going to assign a cursor to pointer, and then we are also going to assign a border radius we're going to give it 5 pixels. Yeah, it's done. Then we are going to close our curly bracket, save that, go back to your project and just have a look. So as you can see, we have added a adding button on our calculator. Next we are going to look at multiplication button. For that we are going to select our multiplication class, and then we are going to style this button, close a curly bracket. First of all, we are going to assign a background color. We are going to give it which is dark golden. Yeah. And the next we are going to give a font size which is 20 pixel, text color white, and width is 100 pixel, same as above. Then height is 50 pixel, then pointer is cursor, cursor is pointer. Next we are going to assign a border around 2 pixels solid as above. So if you look at our border, so we are going to assign this border to our previous class as well. So paste it here as well, save that, and also we are going to assign same border radius as above class. Save that, go back to your project and refresh that. So as you can see, now we have added a wrong color to our multiplication. Go to original project. So you can see, if you go inspect it, so what color we have this color. We save that and paste it here. A background color, save it, paste it here, save that, refresh the page. So let's have a look. So as you can see, we have changed our color. तो अब नेक्स्ट हम जो है डिवीन का बटन माइनस और इज इक्वल टू का बटन इसको डिज़ाइन करेंगे. तो इसके लिए लेट्स गो बैक टू कोड में जाते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा कलर है. सो इजी टू, इफ यू राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू योर कलर, select the color, copy this
गो बैक टू योर कोड एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। और साथ ही हम जो माइनस का बटन है उसको असाइन कर देंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो इस बटन की भी प्रॉपर्टी सेम है जैसे कि डिवाइड बटन की है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे सारे को टू सेव सम टाइम और पेस्ट करवा देंगे। इफ यू सेव इट एंड गो बैक टू योर कैलकुलेटर ब्राउज़र और यहाँ से आप रिफ्रेश करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट में कौन सा कलर है। इसके लिए तो ये है और इसके लिए कौन सा कलर है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ये कलर कॉपी कर लेते हैं एंड गो बैक टू योर कोड और यहाँ पे इसको पेस्ट करो। Here you go, save that, now go back to your browser और आप रिफ्रेश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि we have changed color on our minus button। तो next अभी हम इस बटन को डिज़ाइन करेंगे। For that if you go back and select यहाँ से कौन सी वाली है, रिजल्ट बटन, जो कि हमारी ये क्लास है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस क्लास को हम पेस्ट करेंगे, इसका हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए फिर इजी है, अगर आप यहाँ से जाके यही कलर को सेलेक्ट करें, ऑरेंज, कॉपी कर लें, गो बैक टू एंड पेस्ट करें और सेम जैसा कि हमने प्रीवियस माइनस बटन में सेम CSS प्रॉपर्टी जो प्रीवियस बटन की थी वो डाली है। तो हम इसको दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सारी प्रॉपर्टी, जस्ट बैकग्राउंड का फर्क है, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे और फिर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। Save that, go back to your original project, refresh it। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बटन रेडी हो गए हैं। तो नेक्स्ट लास्ट बटन है, इसके लिए हम बैक टू कोड जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसकी क्लास, इसका नाम है क्लियर बटन, ये हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करके, ये अगर हम वापस ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे जाएं, इसका कलर जो है सेम रेड है। तो हम यहाँ से इसको स्ट्रेट वे यहीं से बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर करके रेड असाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्लियर बटन। तो क्लियर बटन की CSS प्रॉपर्टी सेम है जैसा कि इस बटन रिजल्ट बटन की है। तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे और ये जो CSS प्रॉपर्टी है इनको कॉपी कर लेंगे टू सेव सम टाइम। तो हम पेस्ट करवा लेंगे और साथ ही हम इस बटन की जो रिजल्ट बटन क्लियर बटन है इसकी हम जो है ना विड्थ चेंज कर लेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को सेव करें एंड गो बैक टू योर ब्राउज़र और इसको रिफ्रेश करें तो देख सकते हैं कि हमारा क्लियर बटन भी रेडी है। तो नेक्स्ट हम इस कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। उसके लिए जावास्क्रिप्ट के थोड़े से मेथड हैं, वो मैं आपको बताता भी और समझाता हूँ वो कैसे यूज़ करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेटर अभी फंक्शनल नहीं है। जैसे कि अगर आप प्रेस करें नंबर 1 2 3 4 5
nothing appears in our text box, or you can input box or result box you can say, इसमें अभी कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। तो इसकी मेन वजह ये है कि अभी हमने फंक्शन नहीं लगाया। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। तो इसके लिए अगर आप नंबर 1 बटन पे जाएं, तो इस पे लिए जब हम इसको क्लिक करें तो इस पे हम ऑन क्लिक वाला ऑन क्लिक फंक्शन है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मुझे फंक्शन लिखने दें, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे फंक्शन काम करता है। फिर हम लिखेंगे कैलकुलेटर एंड डॉट रिजल्ट आउटपुट, ठीक हो गया, डॉट वैल्यू प्लस ये रिजल्ट डॉट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा जी फंक्शन। सो अभी मैं आपको ये समझाता हूँ ये फंक्शन कैसे चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब अब कोई भी वैल्यू अपने कीबोर्ड से या कैलकुलेटर बटन से इंटर करते हैं, सपोज हमने नंबर 1 इंटर की, तो ये कैलकुलेटर पे जाएगा, फॉर्म के अंदर जाएगा, फिर इस फॉर्म को एक्सेस करके इनपुट के अंदर जाएगा और उसमें वो वैल्यू ऐड करेगा। सपोज अगर वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटर के अंदर 2, 3, 4 है, तो उसके आगे सपोज अगर आपने ऑलरेडी 2 इंटर की है, तो उसके बाद आप 3 इंटर करना चाहते हो तो कैसे ऐड होगी। तो उसके लिए सिंपली वो ऐसे एक्सेस करता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अपने वैल्यू अगर आपने डालनी है, तो हमारे पास अगर ऑलरेडी वैल्यू है तो ये उसके अंदर एक और वैल्यू, जैसे कि अगर सपोज करेंगे हम इंटर करते हैं 1, ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में अगर आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ा हो तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बारे में आप ब्रीफली मज़ीद भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो मैं कोई ट्यूटोरियल, अच्छा सा ट्यूटोरियल इस पे बनाऊंगा। तो ये अगर आपने ऐसे इंटर की, तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इनपुट बॉक्स में, वो आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अगर हमने आरडी हमारे पास 1 है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी आरडी इनपुट बॉक्स में 1, ठीक है। और इसको बेसिकली ये ऐड नहीं है, ये जो ऐड का प्लस का साइन है ये ऐड नहीं करता, बल्कि ये 2 कैरेक्टर को इकट्ठा करता है। जैसे कि इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर ऑलरेडी आपके इनपुट बॉक्स में नंबर 1 है, तो आपने कीबोर्ड से 2 को प्रेस किया, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, फिर 1 और 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 नहीं होगा। फिर अगर आपके पास अब इनबॉक्स में जो वैल्यू है वो 12 है, तो नेक्स्ट वैल्यू आप क्या डालते हैं, अगर आप 3, आपके पास 12 ऑलरेडी इनपुट बॉक्स में है, तो आपने क्या प्रेस किया, आपने 5 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 5। तो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है। मैं भी आपको ये शो भी करता हूँ, जैसे कि मैंने ये मेथड सब पे अप्लाई कर दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमारा काम कर रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी ब्राउज़र रिफ्रेश की, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने 1 इंटर किया, फिर हमने 2 किया, फिर 3 और 5। सो बेसिकली जो हमने फंक्शन ऑन क्लिक का फंक्शन ऐड किया बटन पे, उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि वो 2 कैरेक्टरों को इकट्ठा करता है, जैसे कि 1 2 3 और 5। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी मैं क्लियर करता हूँ, अभी क्लियर का बटन काम नहीं कर रहा, अभी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अगर आपने 1 प्लस करके 2 किया, तो अब जब
इंटर करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 3। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे जो कि एक कैलकुलेशन है और सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का मेथड है। मैं अभी आपको शो करता हूँ। देखते हैं कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा मेथड है। सपोज करेंगे अगर आपके पास ऑन क्लिक मेथड हम यूज़ करेंगे, यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और हम एक मेथड यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का जो जिसको कहते हैं एवल। बेसिकली एवोल्यूशन मेथड है। कोई भी चीज़ आपको एवोल्यूट करनी है तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये एवल मेथड जो है ये कैसे काम करता है। अगर इसके अंदर हम जाके डबल कोट को बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम ये ही जो है ना कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने वैल्यू डाली इनपुट बॉक्स में, सपोज हमने डाली हमारे पास वैल्यू थी, इधर मैं लिख के बताता हूँ अगर आप इजीली समझ जाएंगे। अगर मैंने डाली 1, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से कोई ऑपरेटर प्रेस कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया प्लस पे, तो सपोज करें मैंने प्लस किया, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने 2 किया, ठीक है। ये इंट्रो की वैल्यू है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे रिजल्ट बटन पे इज इक्वल टू बटन पे, तो हमारा रिजल्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ये मेथड रन होगा, ये मेथड रन होगा, फिर ये 1 +2, ठीक है। और जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑन क्लिक मेथड रन होगा और हमें रिजल्ट देगा 3 इनपुट बॉक्स में। ये ऐसे मेथड काम करता है। तो चलिए आपको बताते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए मैं इसको सेव करता हूँ। इफ आई गो बैक टू माय ब्राउज़र, रिफ्रेश इट, अगर 1 मिनट में देखता हूँ मैंने सेव भी किया या नहीं। यस, Ctrl+S, ठीक है। गो बैक टू योर ब्राउज़र, रिफ्रेश इट, 1 + 2 और देखें ये रिजल्ट आ गया 3। अगर हम इसको क्लियर करें, अभी क्लियर का बटन नहीं वर्क कर रहा, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा फंक्शन है। तो अगर आपने 5 × 5 is equal to 25, so this is how our calculator work. So let me try Debian as well. So let me check how Debian works. 4 को डिवाइड कर दें 2 पे तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा ये सारा ही मेथड ऑलमोस्ट चल रहा है। तो अभी हमने क्लियर बटन पे काम करना है। मैं अभी दिखाता हूँ कि ये क्लियर बटन कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इफ आई गो बैक टू माय कोड एंड यहाँ पे हमने जाना है, ठीक है। और यही हमने ऑन क्लिक मेथड को कॉपी करना, या आप लिख भी सकते हैं फॉर टू सेव सम टाइम। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ नल। बेसिकली जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये इनपुट बॉक्स की वैल्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। अगर हम सेव करूं और इसको मैं दोबारा यहाँ पे जाऊं, रिफ्रेश करूं और 4 + 2 हो गया 6। और अगर मैं इसको क्लियर करूं तो ये देखें क्लियर बटन भी वर्क कर रहा है। तो अगर आप 2 × 5 करें तो 10 हो गया। फिर आपने कोई और डिजिट मल्टीप्लाई या माइनस करना है तो आप इसको क्लियर करें। तो जैसे कि 7 माइनस कर देते हैं 2, ये 5 हो गया। फिर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से हम एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3। तो होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मैं उस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा। एंड सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।